नमस्कार। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित व्याख्यान में सभागार में उपस्थित और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी साथियों का स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है कॉपीराइट इन फिल्म्स एंड परफॉर्मिंग राइट्स। और आज के व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है श्री जगदीश स्वरूप जी, एडवोकेट, पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार कॉपीराइट्स, भारत सरकार। और अध्यक्षता करेंगे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र गौर जी। सर्वप्रथम मैं हमारे निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि आज के अतिथि का विद्यालय की ओर से पौध और विद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से स्वागत करें। धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने तथा स्वागत वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं आज के व्याख्यान के अध्यक्ष तथा विद्यालय के निदेशक प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर जी को। सर। Good morning. So let me thank our honorable speaker, Sarup ji, for giving his time and sparing valuable time for this important talk today. NSD basically is an institution which engage in various kind of creations. And when we talk about intellectual creations are in different forms, maybe in documentary form, in the form of performing arts. So as an intellectual creator of any kind of new information, we have certain rights and responsibilities. Many times we are engaged in information creation, knowledge creation, but we are not aware of our rights and responsibilities. During discussion, interaction with some of my faculty colleagues last few weeks, I felt that there are a number of areas where our students, our artists, our performers, they should know about their rights and responsibilities, because when you are having your classes, while using the research or academic material, you should know what is correct way of using, what is fair use. When you are writing something, you should know what are the rights you have as an author of that particular piece of information. When you perform, you use several types of material, several people are engaged. There is a script writer, there is a designer, there is a director. There are so many roles and responsibilities in a particular creation. So are those people aware of their rights and responsibilities? So that's a very important area that sometimes because of these ignorances, people face a lot of difficulties. There are so many examples I have come across where there is arbitration between individuals and institutions. There are even are we aware of various kind of laws dealing with public performances? And most of the time what happens, that institutions say that no, I'm not concerned with that. As an individual performer, as an individual person, you are responsible for that. So who is facing the music? The creator of the information, the performer. If you see the small declaration or some kind of privacy statements on various platforms, institute does not have anything to do with the individual views or the ideas expressed by the author or the performer or the creator. So by just giving that sentence, institute is not
taking any responsibility. Even as an institute, students of NSD, whenever you are engaged in certain academic research or performance activities, institute is not responsible for you. If you come across anything which is violation of laws, rules, regulations, guidelines, ultimately you are going to be punished for that. So are we really aware, our students are really aware of various kind of those rights and responsibilities? So after discussion, we thought and we discussed that we should have a series of lectures concerning these areas. And today's lecture is the beginning in that direction. It may not be the only lecture, there may be a series of lectures to be followed in the due course of time. I know many of our students or our faculty may be engaged in some other engagement because this was organized on a very short notice. But in future, definitely wherever we have this kind of program, we'll include in our calendar, academic calendar, so everybody should attend those kind of lectures. And I have requested Mr. Parag to record this and make it available for further viewing for the people who cannot join today in this auditorium, or also who are not able to join online. Because my idea was that not just our students, our large alumni base, or even the other institute or individuals engaged in such performances, they should also benefit from those kind of views and those kind of rules, regulations. So my request to all of you, he is a very experienced person who has dealt with a lot of cases and issues when he was the deputy registrar in the registrar office of Government of India, because you know most of those cases are going to be faced, and he was giving advice to many such institutions. So definitely in the first series of these lectures today, he will talk about mostly copyrights and the performing rights, and we are going to listen him, and I don't want to take more time in this regard, and I just invite him and request him to deliver his lecture. Thank you very much. Thank you, Director Sir, for inviting me on this August forum to share my views on copyright in performance and films also together. Ladies and gentlemen, good morning to you. First of all, I would like to have a bird eye view on the performance right in a whole in my short PPT, which was prepared in a short notice. So I request Mr. Parag to kindly share the So this PPT deals with the performers' rights in India, which is enshrined under the copyright law, the act which administers the copyright in India. So this is in short copyright administration, which is which is enshrined in the Copyright Act, administered by the Copyright Act 1957 as amended. See, first I would like to give you a word overview of the Act in the PPT, then I will discuss in detail in my speech. So, administered by the Copyright Act 1957 as amended in 2012, that is the latest amendment made in the Act, and the copyright rules, of course, it was promulgated, repealing the earlier copyright rules 1958. So, as far as performers' rights are concerned, this latest amendment in the Act in 2012 is a game changer actually. It plays an important role to recognize not to recognize because it was already recognized in 1994 amendment, to enhance the performers'
rights in their rights. Uh, Primarily, the aim of the Copyright Act is to protect creative works such as literary, dramatic, artistic, and musical works. Over time, need was felt to protect the ancillary rights as well as termed as neighboring rights. So performers' rights are not copyright in actual sense. It is parallel to copyright, that is called neighboring rights. So you are protected under the neighboring rights. You must note it. Neighboring rights were introduced with the amendments of 1994. As I said, it was introduced earlier in 1994, thereby recognizing performers' rights. Next slide, please. So these are the short bullet points of neighboring rights. There are several rights ancillary to the copyrights. These include broadcasting rights and performers' rights. These are not direct subject matter of copyright, as I said earlier. Neighboring rights are a set of exclusive rights provided to broadcasters and performers in respect of their broadcast and performance respectively. Through the amendment in 1994, the Copyright Act recognized the rights of the performers under section 38, 38A and 38B. These three sections were inserted in 1994 amendments dealing with the performers' rights and broadcasters' rights, of course. When any performer appears on or engages in any performance, he shall have a special rights to be known as performers' rights in respect of such performance. May I come to next slide? Yeah. Performers vis-a-vis performance. So these two are compared. What are the rights of performers with respect to their performance? So who are performers? This definition was also introduced in 1994 amendments, and the performance scope was made quite wide. The performance includes an actor, singer, musician, dancer, acrobat, juggler, a snake charmer. That is very, very specific to Indian context, because nowhere in the world snake charmers are found. And India is famous for snake charmers. Earlier it was known, unfortunately, as country of elephants and snake charmers and rope breaks, all those things. So snake charmers were also included specifically. Legislature, it was debated in the standing committee before the legislature, and they insisted that snake charmers should also included in the performers definition. Then a person delivering a lecture. In that sense, I am also a performer before you. Any other person who makes a performance. Now, what is the performance? To performance in relation to performers' rights means any visual or acoustic presentation made live by one or more performers. That is performance. You must be aware of, because you all are students of this August Institute, and you are well aware with the performance concept. Next slide, please. So, performers' rights offer limited time monopoly over performances, because the copyright or performance right does a balancing act. Of course, it ensures that the fruit of creation of any work or performance must be enjoyed without any hindrance by the creator or performer. But same time, it also ensures that its fruit must be shared by the public in large also. Because if it is without any limitation of time,
is vested in the performer or the creator, the public will not be able to enjoy its fruit in future. So, performance right offers limited time, which I come in later on during my speech. कि कितना term है, how much term they offer. Performance rights are protected for a period of, it is already okay. Performance rights are protected for 50 years, beginning from the year following which the performance is made. Now, performance rights, what are their rights? So, I can skip in detail. These are the headings, which is fixation, make available, distribution, rental, reproduction, communication to public, and then broadcast. Next slide, please. Apart from because the earlier rights which were discussed, these were financial rights or economic rights. Now, moral rights of performance are also recognized. Earlier, prior to amendment of the 2012 Amendment Act, the performance moral rights were not recognized. So, rights of paternity, performer's exclusive right to claim to identified as the performer of his performance, right of damages against distortion. So these are I will discuss this in detail during course of my speech. Then next slide. Then again, limitations to a performance exclusive rights, because the performance rights or author's right cannot be enjoyed without any limitation. So certain limitations and restrictions are there, which I will come later on. Then next slide. Then there are civil and criminal remedies available in case of infringement by way of injunction, damages, accounts of profits, and then penal provisions for imprisonment of 6 months to 3 years, then financial penalty 50,000 Indian rupees to ranging from 50,000 Indian rupees to 2 lakh Indian rupees. Next slide, please. Now, this is the end of my PPT. I'll come in detail on this thing. So, earlier now you had a broad overview of general concepts of performance rights. Now, as already I told that neighboring rights or performance rights are similar to the copyrights available to other authors of the works. Unfortunately, despite sufficient skill and labor by performers in their performance, their rights were not recognized globally, not in India but globally. This was the scenario till the first half of 20th century, that means till 1950, because by and large it was considered as unproductive labor. Earlier it was considered, there was a misconception or wrong notion that performance art has no productive thing for the society and is just for entertainment, so it should not be protected, which was very, very wrong notion. Even in India, the Copyright Act 1957 did not recognize the performers' rights till the Copyright Act was amended in the year 1994, while the Copyright Second Amendment Act of 1994. Though performers quite often performed an existing work, and his performance was derivative in the same way as translation and abridgment of literary work, which was protected under the copyright law, means normally performers make their performance based on some literary work. So in that sense they are equal to translator in literary work, but still their rights were not recognized. Whether the performance was live or fixed in any medium, it was unfortunately in both the cases.
In such cases, only producer of sound recordings of cinematograph films were recognized earlier as owners of rights and they reaped the benefits of the protection. So there were two reasons for this. Earlier, the performance was not in intangible format, and the second most important reason was that uh, the performers were not protected under law because it did not recognize the work within the definition of Section 2Y of the Copyright Act 1957. Even the broadcasting reproduction right was protected by the Broadcasting Authority, and the performer had no control over their performance over radio or TV. This I talk about the scenario before amendment in the 1994 or even in the latest amendment in 2012. This was the earlier position. Now here to make it more clear by an example of a court case. Some of you might be aware with this case. Fortune Films International versus Devanand, the famous film actor. The Bombay High Court held in 1979, that is prior to amendment in 1994, no copyright subsists in the performance. In this case, going briefly in this case, the producer agitated the issue of the work definition and argued the work definition as enshrined at that time in the Act, that not being in any tangible format, the performance of the cine artist, that is Devanand, was not protected. The court agreed to their argument and they passed order in favor of the producers. But as I said, in 1994 amendment is a game changer. By that time, the TRIPS agreement was concluded in 1993, and Copyright Second Amendment Act 1994 was enacted, as it was obligatory for India under the TRIPS agreement to become a member of it, that India has to protect the rights of performers after signing and ratifying the treaty, which came ultimately in force in 1995. Before that, our act was amended to make it TRIPS compliance. One of the objects of the Amendment Act was to extend protection to all performers by means of a special right to be known as performers' right in respect of making of sound recordings or visual recordings of their live performance and of certain related acts thereto. The definition of performance was also amended by the Amending Act. In relation to performers' rights, any visual or acoustic presentation made live by one or more performers was the definition of performance. A new section 2QQ was inserted to define performer to include an actor, as you said, as you've seen in the PPT. Section 2QQ was inserted to define performer to include an actor, singer, musician, dancer, acrobat, juggler, conjurer, snake charmer, a person delivering a lecture, or any other person who makes a performance. It was further improved in the Amending Act 2012, and the Amending Act 2012 made drastic changes to the exclusive rights of the performers. A new section 38A was inserted, which provides exclusive right to performers, and their rights are similar to economic rights of the author, which were already available to authors of other works under Section 14 of the Copyright Act. So what is Section 38A? This says the performers have exclusive rights to do
or authorize the doing of any of the acts enumerated below in respect of their performance or any substantial part thereof. That is, namely, to make a sound recording or a visual recording of the performance, including reproduction of it in any material form, including the storing of it in any medium or electronic or by other means. So, performers are now fully authorized, fully entitled to make their to make a sound recording of their direct performance or visual recording, and it may be reproduced by them in any material form, because it changes, it is ever changing, the medium is ever changing with the passing of time, including the storing of it in any medium by electronic or any other means, issuance of copies of performance to the public. Here one restriction was made, that not being copies already in circulation, because prior to amendment, the performance had no right to the copies which were already in circulation prior to amendment. The performance were given no right, but post performance they were all they were vested with all these rights. The other right is communicating of their performance to the public, selling or giving it on commercial rental or offer for sale or rental any copy of recording. Now, as far as broadcast is concerned, they were also authorized to broadcast or communicate the performance to the public, except where the performance is already broadcast. So, if any performance is directly broadcasted, like Kaun Banega Crorepati, it is directly broadcast. In such, the performer Amitabh Bachchan has no right. But if it is subsequent broadcast, then of course performers have a right. To clearly understand section 38A 1B, like this broadcast issue or subsequent broadcast issue, I would like to quote another court case, that is Star India Private Limited versus Piyush Agarwal and others, in which Delhi High Court observed that with reference to a broadcast already made qua the information which was disseminated through the first broadcast in public domain, the performer could not claim a right in view of section 38A 1 small b, which says that the entitlement of the performer with respect to his performance rights was to broadcast or communicate the performance to the public, except where the performance was already broadcast. It is a famous case dealing with some cricket matches. The court further observed that the performances of the performance in the cricket match event were recorded in a visual or sound recording of the event, and to which performance only these specific entitlements existed as specified in section 38A and nothing more. However, here it is important to observe that in view of section 38A, the reproduction or communication of the exact sound or visual recording amounts to infringement of the copyright under section 38A and 51 of the Act. So, except to the extent of original sound or visual recording of the performance and rights which flow therefrom, there is no other right of performer or his assignee with reference to such recording or the performance. In other words, to make it more clear, the underlying content or information in such recording are not the subject matter of the copyright. Thus, if such information or content is used only for creating an information base or database, it does not amount
to copyright infringement, either in performance or in the audio or visual recording of the performance. So if it is used for some inherent information, for creating a database or for some educational purpose or public research purpose, so no performer can claim that it is done without my authority, without my permission, and it is an infringement. No, it is no infringement. Another important aspect to note here is that if a person shall not be treated as a performer whose performance, this is very important aspect. I repeat, another important aspect to note here is that a person shall not be treated as a performer whose performance in a cinematograph film is casual or incidental in nature, and the normal course of practice of the films industry is not acknowledged anywhere, including in the credits of the film. Like in any film, some incidental or occasional performers may appear, like a sabzi wala selling sabzi in market, or such type of incidental things. So they cannot claim at any stage that they were performer and they should also be given their economic rights. No. However, those persons still have a moral right. So such person, though they don't have any economic right, but they have the moral right. So such person under section yes. However, such person shall still be considered as performer for the purpose of section 38B, which provides moral rights to a performer to restrain or claim damages in respect of any distortion, mutilation, or other modification of his performance that would be prejudicial to his reputation. If suppose some distorting act is made of such type of incidental or occasional actors, which is prejudicial to his moral right, prejudicial to his reputation, then he must claim the moral rights. Nobody has a right to distort his reputation. However, that is another important aspect. Once a performer has, by written agreement, consented to the incorporation of his performance in cinematograph film, he shall not, in the absence of any contract to the contrary, object to the rights of the producer of the film in such film. So, if any performance is included in any cinematograph film or in a sound recording, the performers cease to have their separate rights. Under such circumstances, the producers of such cinematograph film or sound recording shall become owner of the rights, and the performers cannot claim their rights. Still, the performer shall be entitled for royalties for any commercial use of performance. Suppose a cinematograph film is made for showing in the theaters, the performers cannot claim any right over it because it is made for the exploitation in a theatrical background. But if such film is communicated to public, like some hotel, hospital, or other public places where general public is entertained by such films, such performance, the performers shall have a right to claim their separate royalties from owners of such hospitals, hotels, or public places. Now, I come on moral rights available to the performers. No moral rights before the enactment of Copyright Amendment Act 2012 was recognized, though moral rights were given to other authors of the works
where copyrights were protected, performers were not recognized for moral rights. But under Section 2012 amendment, Section 38B, a new section was inserted, which is similar to Section 57 of the Copyright Act, which provides moral rights to the author. Under Section 38B, two moral rights are provided to the performer in respect of his performance. These rights are available to them independently of their rights after assignment, either wholly or partially. Once a performer has assigned his performance to a producer of sound recording or cinematograph film, he ceased to have other economic rights, separate rights. But still, even after assignment, either fully or partial assignment, he has moral rights. The right to be identified as the performer of his performance, except where any omission is dictated by the manner of the use of the performance. Means, performers has a right to be identified in such work that he is the performer of such performance. However, there is exception where it is necessitated that it is not possible to acknowledge his role, then the exception is given under the Act, and producers are protected in that sense. The other moral right is available is the right to restrain or claim damages in respect of any distortion, mutilation, or other modification of his performance that would be prejudicial to his reputation, his or her reputation. It is, however, noteworthy that mere removal of any portion of a performance for the purpose of editing or to fit the recording within a limited duration or any other modification required for purely technical reasons shall not be deemed to be prejudicial to the performer's reputation. So such acts are permissible. Now I come on term of protection. Under 1994 Amendment Act, the term of performance, prior to 1994, performance, there was no term for performance because performance was not recognized. But in 1994 Amendment, the term of performance rights were only for 25 years from beginning of the calendar year next. Suppose if a performance is made in 2022, so beginning 1st January 2023, the performers would enjoy the neighboring rights in his performance or his successors till another 25 calendar years. However, since India was a party to TRIPS agreement by now, to make the act in compliance with the TRIPS, the performers' rights was extended to 50 years. From 25 years, it was extended to 50 years because it was under a mandatory condition under the TRIPS agreement, while the Copyright Amendment Act 2012. So now the performance rights are for 50 years from the calendar year next following the year, following the year in which the performance was made. 1994 amendment earlier introduced Section 39, which provides that the performance rights shall not be deemed to be infringed under following conditions, like the making of any sound recording or visual recording for the private use of the person making such recording or solely for purpose of bona fide teaching or research. So these called fair clause use. In case of copyrights also and in labeling rights also, certain exceptions and limitations are given. Suppose if some performance is made on a stage, some drama is going on a stage, and a person records it for his personal entertainment, for his personal use within the four wall of his house,
the performance cannot claim that it was made without his permission, and he should be provided royalty or damages, because it is for personal use. Personal use, it is permissible under the Copyright Act globally and in India also. Similarly, if such recording is made for bona fide research or teaching purpose under the classroom by some professor, some lecturer, then also it is protected. No performer can claim copyright in it or neighboring right in it. The other exception is the use consistent with dealing of excerpts for a performance or of a broadcast in reporting of current events or for bona fide review, teaching or research. Suppose some drama is going on at a stage and news channels are broadcasting it. Some part of it is broadcasting, not the whole drama, but some part of it is being broadcasted to report, to cover the news, then it is not any infringement, because current reporting is not an infringement. The other exception is such other acts which any necessary adaptations and modifications which do not constitute infringement of copyright under section 52, fair use clause. So all those acts which have been mentioned in section 52 of the Act, because it is, you may see in the Copyright Act, it is a quite long section, not possible for here to quote. So section 52 of the Act may be applicable with suitable adaptation and modification in relation to performance of the performer within infringing performer's rights. Still, here is a gray area, because in Act it is provided that section 52 fair clause use with suitable modification shall be applicable in case of performance rights also. No separate fair clause use provisions were given for performers. But this may cause some confusion in practical. While coming on practical, this may cause some confusion, as some of the permitted uses under the section 52, which is applicable in case of some tangible work like literary work, etc., are not applicable in respect of performers' rights. Performers' rights are limited vis-a-vis the literary rights or rights in computer works, etc. So, legislature, our parliament should take note of this flaw which is in the current act, and if any future amendment of the act is made, which is must, they specifically should identify the permitted uses in right of performers' rights also, and they may enumerate it like copyright fair clause uses are given. Either they may append some schedule or may describe in the act body itself, but they must take a call. Section 39A of the Copyright Act makes some sections of this act applicable with necessary adaptations and modifications in relation to the performer's rights in any performance. So, performers or copyright owners are protected under the law for any infringement of their work. So 39A of the Act with suitable modifications are made applicable in case of performers' rights also. Like sections 19, 30, 30A, which are dealing with licenses, sections 33, 33A, 34, 35, 36, which deals with copyright societies. Section 53 deals with the importation of infringing copies from foreign countries.
Sections 55, 58 dealing with civil remedies, which are available to performers also. Then sections 63, 64, 65 dealing with penal provisions. Section 65A, protection of technological measures. Section 65B, protection of rights management information, which is more important in these days. And section 66 finally, for disposal of infringing copies. So all these remedies are available to performers. Now, where copyright or performance rights subsist in respect of any work or performance that has been broadcast, no license to reproduce such broadcast shall be given without the consent of the owner of rights of performer, as the case may be, or both of them. Because generally, if some broadcast is made, the broadcasting authority becomes the owner of such broadcast. But if it is direct broadcast, and if it is not direct broadcast, in such case also broadcasting authority is the right owner. But for any subsequent broadcast, to reproduce such broadcast, written permission of the owner of rights or performance is must. Performance, without performance express rights, express permission, no subsequent broadcasting can be made by the broadcasting authority. There is also one clause that performance rights, of course, shall not subsist in any performance if that performance is an infringement of the copyright in work. Because if any performance is illegal, it is illegally made, infringement of some bona fide copyright, then he cannot claim any performance right over it. There is also one exception that performance rights shall not affect the separate copyright in work in respect of which the performance is made. Suppose if some literary work is there based on in some drama is played, so author of that work separately shall enjoy the copyright in his work, and the performer shall enjoy his performance rights. Performer cannot overcome the right of the authors in the literary work. Now, 2012 Amending Act made another important provision for creation of performers' rights society under the collective administration system. As under definition, performer is under various categories. So each class of performer as defined under the Act may have separate performer society, like dancer may have their own society, singer may have their own society, even snake charmers have their own society, this and this, like this. So one, at present, there is one registered performer society, only one performer society, that is ISRA, Indian Singers Rights Association. Headquarters of this society is in Mumbai, and this society was registered first time in 2013. Singers whose performance is incorporated in some cinematograph film or sound recordings, they can claim the royalties for their for exploitation of such work in public places for commercial use. So such singers have come under one umbrella, the society called ISRA in short. Late Lata Mangeshkar was its chairman. Several prominent singers are its members like Sonu Nigam, Anup Jalota, Alka Yagnik, and so on. The society is playing a very important role to protect the singers' rights.
So other kind of performers must think over and they must come forward to apply for registration of their society before the government of India and enjoy the fruits of their labor for any commercial use. Now, because the presentation is overall for films and performance rights, major part of my presentation is on the performance rights. Now, I briefly touched some copyright provision the films also. Section 13, 1B says that copyright shall subsist in copyright films. That is, it means the cinematograph film is recognized as a work under the Copyright Act. Section 13.4 makes clear that copyright in a cinematograph film shall not affect the separate copyright in any work in respect of which or a substantial part of which the film is made. What are copyright? Copyright provides certain acts to do in relation to their work or performance to an author or performer. What is that in case of a film? Section 14D, in case of cinematograph film, provides certain works which can be done by the owner to make a copy of the film, including a photograph of any image forming part thereof, or storing of it in any medium by electronic or other means, to sell or to give on commercial rental or offer for sale or for such rental any copy of the film, to communicate the film to the public. With this, I came to conclusion of my presentation. Tomorrow is World Copyright Day, being celebrated globally as declared by United Nations. So I extend my greetings to you all for the Copyright Day in advance. With this, I take your permission to conclude my. We can address to any questions if you have any questions. धन्यवाद सर। बहुत ही महत्वपूर्ण, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और सूचनाप्रद व्याख्यान प्रस्तुत किया है जिससे हम सभी लाभान्वित हुए हैं और ये शायद पहला मौका है जो हमसे जुड़े एक एक्ट के बारे में हम सुन पाए, सर से जान पाए। अभी अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। अगर किसी को सवाल है एक एक करके सर के साथ सवाल जवाब कर सकते हैं। Right, with the permission of the chair, I have one small question that if as an employee or as a student of the National School of Drama, if one of my performance is recorded and then if it is distributed financially, distributed and financial benefit is done from it, then will I be entitled for sharing the financial benefit? No, because Yes. No, because it is clearly mentioned in the Act that any work or performance made during course of an employment, either with some government organization, like you are speaking about this institute itself, which is a government organization, government undertaking. The institute itself is the owner of such performance. So any employee cannot claim separate rights over it and no economic benefit will be accrued to him. And if somebody is temporarily employed for that project, let's say for example, if somebody is appointed as a music designer for a particular play, even then he will be considered as whatever employee? it may be, because it is created during course of employment, whether temporary or permanent. So in such case, the institute is the owner. Right.
And I have another question that you have talked about the performers' rights. If a play is made by a director and designed by a designer, and if does the moral rights of the play, of the performance, belongs only to the performer or the director or the designer, or how it is, or the producer? No, if director is performer, if No, director if is the director is not performer, director is only then directing. there's and- no moral right to director. Only performer has a moral right. Okay. In November 2021, National School of Drama invited tenders for digitization of audio and video content project. And I hope within a 1 or 2 years' time, it will be over. I also anticipate that either NSD itself will have its OTT platform or will collaborate with some other leading OTT platform. For this reason, I have two questions which are connected with the royalty issue of payment to be given, which is directly connected with the copyright issue. My question number one is, to the Indian and international directors who came to NSD to direct either the student production or NSD repertory production, as the payment made to them at that point of the time was for directing a play and not for the 3-camera setup video production made out of the play, which was solely meant for internal academic study or record purpose. Now it will be utilized for commercial or non-commercial online broadcasting. That's the question number one. Question number two, also how NSD will be dealing with the Bharat Rang Mahotsav, BRM, footage of 20 days for almost like 20 years, recording of various Indian and international plays which participated here only to perform live, and their copyright still lies with the producer of the play, as NSD is not the producer of those plays. So these are the two questions. Sir, can you shorten your question? Because let me write down your question, then I will be, yeah. Thank you. Divide. Let me start with the second question first. We organize a festival called Bharat Rang Mahotsav. So in this we invite plays from different groups or institutions, and those plays are selected, and we organize this festival, and those plays are being played during that particular festival. So NSD is making certain payments, expanding, like a major part of expenditure on organizing this festival NST is doing. But those plays are written by somebody else and produced by somebody else, but played under that particular festival. So in this context, who is the copyright holder? If I'm correct, you are asking this, who is the copyright holder, NSD or those respective producers of the play? In this, financial implications are like that we have given funds for organizing this festival, and if we have the recordings of that, can we use those recordings for OTT or any kind of online platform for broadcasting? In such case, NSC has the full right, and it can utilize this work in any manner. The performers, because they are compensated for it, they cannot claim any separate economical rights. Of course, they would have moral rights, but no economical rights. And what is the second question? First question. It is first question, first which I think it answers fully to your first question, first part of your question. My question in first case is, when the directors are being okay, first let me talk about the Bharat Rang Shall I Mahotsav. go it first? Yeah. So in first part of question, as I said that how you come on conclusion that after 27 years this right was going to expire, because now it is 50 years. No, that 27 years is just for the digitization started in India. It has nothing to do with 27 years or 25 years. My question is, if a director is being invited to direct a play here,
and a video recording was made, whether 10 years ago or 20 years ago, for example, now that once it was on a tape format, earlier beta, digibeta, high band, all those kind of formats were there, and now that is being digitized now, which means it will be converted into a particular file, whether Yeah. MOV file or something else, or some other kind of formats are there, which will be used for longer term duration, because the tape will get stuck after 2 years or 3 years or 4 years, Yeah. and become redundant more or less unless you run it after 3 months or 6 months. So digitization process has started, which is very, very important, because this organization... With the advent of technological measures, Correct, it is important. correct. So my question is that now that digitized version of the play would be used in an OTT platform, which would be, I hope, will be a paid or unpaid. There are two options only. So if it is going to be a paid version, for example, then since the director has directed only for the performance, live performance, the right was only for the live performance. Yes. And now it is being utilized for the broadcasting of online OTT platform, whether paid or unpaid. So does he can claim the copyright issue that since I directed the play, at the end of the day, I was the director. Of course, NSD was the producer, but I was hired only to direct the play, live performance. Okay. Now, after 20 years or 10 years, it is being used for the OTT platform. So, will he be able to claim a certain kind of rights that he need to be paid a certain royalty of that play, because it is being utilized for the broadcasting purpose, whether online, OTT, paid or non-paid? That is question number one. And second is, which is connected with the BRM festival, where people who come here to only showcase their performance, and in the contract which NSD extend to them when they come over here to accept the proposal, they says that it can be used for publicity purpose or some non-commercial purpose and things like that. But once the same recording is going to be used in an OTT platform, because it was a part of the BRM festival, which is being organized by the National School of Drama, so will they be also have a claim on that digitized version of their play, that they also need to be paid royalty? That is my question. Second. No, I think... I just add one more thing. Sure. My understanding is that whatever you are talking, we have not formalized through any contract agreement. Is it correct or not? Yeah, that's what I mean. We have not signed an agreement for Correct. So far live performance or broadcast, because we don't have that kind of contract agreement signing, neither with in case of BRM nor in case of engaging any foreign director or Indian director for any play. So is that correct? We have not a formal agreement for that performance. Now when we don't have a formal agreement, apart from that question what he is raising, in lack of that kind of contract agreement, what are the scenario, like how to deal with that kind of situation? So, in absence of any contract to the contrary, the first part of question, to my understanding, the medium of the expression doesn't matter. In such case, director, I don't think they have a separate copyright or separate claim. And in second part also, the performance paid by NSD, whether it is subsequently utilized by the NSD in absence of any contract to the contrary, they cannot claim any separate copyright. Only moral rights is there, to my understanding. Thank you. I think my concern is little more than that. Like in case of particularly Bharat Rang Mahotsav, what I understood, the play is produced by that particular group. They have written the script and the direction, everything they are doing. And we are paying them some amount of fee for performance to play in this. And there is no restriction after this performance in Bharat Rang Mahotsav. We are not restricting them not to play somewhere else. So the same play may have been done at different locations, vice versa. So first of all,
my understanding of the copyright or whatever neighboring right we are talking, in lack of that particular contract agreement, because we have not put any condition. We have just invited them to play here. So we have not asked them to transfer the copyright or permission right to us. So in that scenario, they can create problem for us. They will say that you have given rights to play in Bharat Rang Mahotsav. You have now taken rights to get it broadcasted. If we use this material for our academic and research purpose within this boundary wall, no issue. But if you have to put on OTT or any kind of online broadcasting platform, there are possibility they may claim that we were given a fee for performance at Bharat Rang Mahotsav. Our rights were not acquired, our rights were not purchased. And in lack of those contract agreement, we may face trouble. It is an open Pandora boxes. Because if you have get that contract agreement signed, okay, this is an exclusive performance for Bharat Rang Mahotsav, you cannot play anywhere else, and we have the rights to get it broadcasted or used for our purpose, it will be easy. But in that case scenario, that's why like yesterday when we had a meeting of Purvatya Samaro, I was just requesting my colleagues to draw that contract form, consent form. Because until unless you have something in writing, you cannot stop anybody going for any kind of legal. Because first thing law will ask when you invited them for performance, where is the agreement that you have taken the rights to get it put on the online? And I think that's the real issue. Real issue is not that like in case of the foreign director or Indian director, yes, we are paying for it, and we have that. Those are the like our student play or our like in-house productions. There is not a bigger issue. Even in lack of agreement, we can do something. But especially in case of Bharat Rang Mahotsav, because those are the outsiders, they have been given a certain fee only for performance. And there are no agreement, we may be in trouble on that case. That's my understanding of this scenario. एंड हेलो सर, इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा कि जो भारतीय परफॉर्मेंस आती हैं, चाहे भारत रंग महोत्सव की किसी की भी हो, सो जो परफॉर्मेंस उसका जो पार्ट है, एक सौ कॉपीराइट वाला पार्ट हो गया, एंड वो हम पर्टिकुलर एक शो के लिए खाली बुलाते हैं. सो हमारा जो राइट्स मेरे को लगता है कि खाली यहाँ तक होता है कि वो हमारे पर्टिकुलरली हमारे लिए परफॉर्म करेंगे, खाली इतना ही हमारे पास राइट है उनके उस अमाउंट को पे करके. किसी को मैं एक शो के लिए 1 लाख रुपये देता हूँ तो उसका मेरा राइट इतना ही है कि वो एक शो के ही लिए मेरे पास उसका राइट है, ठीक है ना. देन हम उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम एकेडमिक पर्पस से कर रहे थे अभी तक, ठीक है ना. अब एकेडमिक पर्पस से जो हम किसी और जिसकी ओनरशिप किसी जो प्रोड्यूसर कोई और हमने कर लिया, बट अगर हम उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे पुटअप करते हैं तो जो उसमें कंटेंट है, उस कंटेंट के को जो कॉपीराइट जो है वो मेरे ख्याल से उस ग्रुप के पास ही रहेगा, और उससे जुड़ी जो कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है कंटेंट के लिए, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो. I agree with you. What you are saying is correct. और कोई सवाल? ऑनलाइन से कोई सवाल है वो ले लें सर. हाँ, उनको ऑनलाइन से. अच्छा सर, एक ऑनलाइन आ रहा है क्या कुछ? नहीं, आप पहले पूछ लीजिए. अगर मैं कोई नाटक करता हूँ, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में करता हूँ या मैं बाहर करता हूँ, कहीं भी करता हूँ, और मेरी अपनी एक शैली है, मेरा एक स्टाइल है नाटक करने का, वो नाटक कोई देखता है, अब वो मेरी स्क्रिप्ट तो नहीं चुराता, वो कोई और टेक्स्ट लेता है, कुछ और करता है, लेकिन वो मेरी शैली चुरा लेता है, मेरा स्टाइल चुरा लेता है, करने का जो तरीका है, और उसी तरीके में वो दूसरा कोई टेक्स्ट इस्तेमाल करता है या कहानी इस्तेमाल करता है, तो क्या इस पर कोई क्लेम बनता है कि मेरे काम करने के तरीके को चुरा लिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आपका जो है वो एक्चुअली मॉरल राइट का यहाँ आता है आपका, क्योंकि वो आपका जो रेपुटेशन है, जो आपका एक स्टाइल है, उसको इन्फ्रिंजमेंट किया गया है, जो आपके सम्मान को या आपके नाम को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है जी. तो इसलिए यहाँ आपको मॉरल राइट है, आप नैतिक अधिकार के अधिकारी हैं, और नैतिक अधिकार के लिए आप उसमें जो है उसमें डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, मुआवजा मांग सकते हैं. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अगर कोई नाटक होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, हम विदाउट एनी स्क्रिप्ट एक प्ले को इम्प्रोवाइज करते हैं,
और डायरेक्टर तो आते हैं बाहर से, लेकिन हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, और हम सोचते हैं कि एक प्ले बनाएं, और बनते बनते वो एक नाटक बन जाता है, एक कहानी भी बन जाती है जिसका कोई लेखक नहीं होता, और वो नाटक होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर उस कहानी को कोई चुरा ले और उस पर कोई फिल्म बना ले, जैसे हमारे बैच के साथ ही एक प्ले है रोमियो जूलियट इन टेक्निकलर, अगर आसिफ, हम 2 लोग बैठे हैं जो उस नाटक से जुड़े हुए थे, कई लोग उस पर फिल्म बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, लेकिन जो उनके डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी कई बार बात हो चुकी है, वो कहते हैं कि अगर इस पर कोई फिल्म बनाता है तो मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत उस पर केस करूंगा। क्या ये संभव है, या वो प्रॉपर्टी किसकी होगी जब उसका कोई राइटर ही नहीं है और बहुत अच्छी कहानी है? नहीं, तो उसमें अगर कोई राइटर नहीं है तो उसमें कॉपीराइट तो किसी का नहीं है। आपने परफॉर्मेंस में ड्यूरिंग कोर्स, आप मतलब परफॉर्मेंस के आपके ड्यूरेशन के दौरान जी। वो कहानी बन गई है, बन गई, तो परफॉर्मर होने के वजह से आपका उसमें पूरा नेबरिंग राइट है, और बिना आपके परमिशन के वो फिल्म अगर बनाता है या अगर वो कहता है कि नहीं हम उसको आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम करेंगे, उसका केस जो है वो नहीं स्टैंड कर सकेगा। तो ये अधिकार डायरेक्टर का जाता है जिसने हमारे साथ मिलकर के वो नाटक इम्प्रोवाइज किया और पूरी तरह वो नाटक तैयार किया, या हमारे ऊपर जाता है? डायरेक्टर ने आपको पे किया है, आपको हायर किया है क्या? नहीं, हम स्टूडेंट थे, वो बाहर से आए थे। स्टूडेंट है तो बिल्कुल आप, क्योंकि आपने स्टूडेंट होने की वजह से कॉलेज के साथ आपने ये बनाया है जी। उसमें तो कॉलेज का राइट होगा, उसमें डायरेक्टर का राइट होगा। डायरेक्टर का होगा या स्कूल का होगा? स्कूल डायरेक्टर, ऑफ कोर्स दे आर डायरेक्टर इन नहीं, उस नाटक, नहीं, मैं नाटक के डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। नाटक का डायरेक्टर क्लेम कर सकता है क्या कि मैंने ये नाटक तैयार किया? कैपेसिटी में नहीं क्लेम कर सकता, स्कूल क्लेम कर सकता है। स्कूल क्लेम कर सकता है, वो नहीं अगर कर सकता। डायरेक्टर स्कूल के बिहाफ पे करता है तो कर सकता है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। और कोई सवाल? अपना नाम इसमें पहले। मैं एकदम क्लियर आपको दो, जितने भी हमारे एनएसडी के फाइनेंस प्रोडक्शन है, वो डायरेक्टर कोई भी हो, बिकॉज वी आर पेइंग ए फी, तो कॉपीराइट इज ऑफ एनएसडी ओनली। चाहे हमारे स्टूडेंट प्रोडक्शन हो, हमारे रिपोर्टरी के प्रोडक्शन हो, टीआई में जितने भी हमारे इन हाउस प्रोडक्शन है जहाँ पर एनएसडी पे करता है, इवन जो हमारे स्टूडेंट के जितने भी प्रोडक्शंस है वो सब, उसमें कॉपीराइट किसी भी इंडिविजुअल का नहीं होगा, वो सिर्फ एनएसडी का राइट होगा। वो बहुत क्लियर है, उसमें इंस्टीट्यूशनल राइट है, क्योंकि इट इज़ बीइंग डन ऑन द फाइनेंस गिवन बाय द एनएसडी। उसमें बहुत कोई उसमें हमें किसी तरह की कोई डाउट की इशू नहीं है उसमें। एक सवाल ऑनलाइन से लेते हैं। ऑनलाइन रिलेटेड एक चीज़ एक बार पूछ लेना चाहता हूँ। अगर ऐसे केस में सारी राइट इंस्टीट्यूट की है, तो अगर किसी परफॉर्मेंस में कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटी हुई है, तो उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंस्टीट्यूट की है कि परफॉर्मर की है कि डायरेक्टर की है कि किसकी है? नहीं, वो देखिए उस केस में ऑफ कोर्स जब उसका राइट जो है वो इंस्टीट्यूशन के पास है, तो उसमें अगर कोई इलीगल या इमोरल चीज़ हुई है तो ऑफ कोर्स स्कूल जो है उसके लिए एज ए ओनर राइट जो है वो जिम्मेदार होगा, उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी आयद होगी। आई थिंक इसमें एक चीज़ मैं डिफ़र करता हूँ, इसमें 2 इश्यूज़ हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं कॉपीराइट ऑनरशिप की, एक बात कर रहे हैं हम लोग जो परफॉर्मर्स के राइट्स की बात कर रहे हैं। इसमें दोनों चीज़ें एप्लीकेबल होंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडिविजुअल जो परफॉर्म कर रहा है he'll be also liable to punish in that case. इसमें स्टूडेंट डेफिनेटली इंस्टीट्यूट भी लाइबल है, लेकिन साथ में वो परफॉर्मर, खाली ये नहीं कि इंस्टीट्यूट के ऊपर ही, इसमें दोनों के ऊपर ही केस होगा। बिल्कुल, वो एक्चुअली मेरा भी यही है कि दोनों का उसमें सम्मिलित वो होगा, लेकिन फिर भी बीइंग एम्प्लॉयर या बीइंग प्रिंसिपल ओनर, जो इंस्टीट्यूट है उसका भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी चीज़ों को डिसेमिनेट होने से रोकें। अगर वो डिसेमिनेट होने से रोक नहीं पाते हैं तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होगी कि उन्होंने क्यों डिसेमिनेट होने दिया। बट परफॉर्मर भी इससे बचेगा नहीं, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो इमोरल चीज़ें करी हैं या इलीगल चीज़ें करी हैं, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनेगी। एंड बोथ विल बी द जॉइंट जो भी होंगे उसके जिम्मेदार होंगे। एक ऑनलाइन सवाल अगर है। हाँ, उसको आप नितिन, आप उसको पिंग करिए जी। आपका परिचय देने के साथ आप बात करिए। हेलो, आपको सुन पा रहे हैं हम। ओके, नमस्कार,
मेरा नाम नीता मिश्रा है, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्नातक बेटी हूँ और मेरे 3 सवाल हैं छोटे छोटे। सबसे पहले, इज देयर एन इंटरनेशनल कॉपीराइट एसोसिएशन? 2, हम भारत में हैं और हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं, तो क्या अनुवाद के लिए कोई कॉपीराइट का नियम है और क्या ऐसे कायदे कानून के लिए कोई एसोसिएशन है, राइटर्स एसोसिएशन या ट्रांसलेटर्स एसोसिएशन है? और 3, हम नाटक वाले जो है जब परफॉर्मेंस करते हैं तो बहुत बार एक कृति या किसी मेन टेक्स्ट से हम इंस्पायर होते हैं और इम्प्रोवाइज करते हैं, तो उस समय में क्या हमें as a rule you need to go back to the main person and pay our due respects in terms of copyright rules? Thank you. International Copyright Association. नहीं मैडम, ऐसा कोई इंटरनेशनल कॉपीराइट एसोसिएशन नहीं है जैसा कि आपने पूछा है। कॉपीराइट इंटरनेशनल एसोसिएशन से मतलब आपका क्या है? यूनाइटेड नेशंस के अंडर एक संस्था है जेनेवा में जिसको वाइपो बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है बहुत सारी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से कनेक्टेड ब्रांचेज हैं सबको एडमिनिस्टर करता है। भारत वाइपो का मेंबर है और कॉपीराइट के जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे बर्न कन्वेंशन है, अभी रिसेंटली 2 नए ट्रीटीज़ आई हैं, कन्वेंशंस आए हैं, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, WCT वर्ल्ड कॉपीराइट ट्रीटी एंड WPPT वर्ल्ड फोनोग्राम परफॉर्मेंस ट्रीटी। इसको वाइपो गवर्न करता है। अगर ऐसी किसी संस्था से आपका मंतव्य है तो यस, वाइपो है। इस क्वेश्चन में एक चीज आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग. देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनेशनल कॉपीराइट ऑर्डर. So that international copyright order is applicable to those countries who signed it. Like suppose we have World Trade Agreement. So we have signed, so we are signatory to that and we have to follow those. Similarly, India is a signatory to the World International Copyright Order. And all the international copyright rules and laws of that orders are applicable in India, but condition is that those rules and laws should not be beyond the provisions of Indian Copyright Act. So the first preference is Indian Copyright Acts, but wherever Indian Copyright Act is silent, and if there is any international creation, and any country can claim that copyright here under that international copyright order. Right? जैसा डायरेक्टर सर ने बिल्कुल राइटली कहा है, सेक्शन 40 कॉपीराइट एक्ट का इंटरनेशनल कॉपीराइट का प्रोविज़न प्रोवाइड करता है। उसके अंदर एक इंटरनेशनल कॉपीराइट ऑर्डर शेड्यूल बनाया गया है। उसमें हालांकि वो बहुत पहले बनाया गया है, अपडेटेड नहीं है, 1999 में बनाया गया था। उसके बाद भारत WTC और WPPT का भी मेंबर बना है, वो शेड्यूल उसमें शामिल नहीं है। तो वो शेड्यूल जो है सेक्शन 40 जो हमारे कॉपीराइट एक्ट के प्रोविजंस हैं, वो इंटरनेशनल कंट्रीज़ को जो उन कन्वेंशंस के मेंबर हैं, जिसका भारत भी मेंबर है, उनको हमारे कॉपीराइट को प्रोविजंस को एक्सटेंड करता है। तो जैसे सर ने कहा कि जो है वो हमारे कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ नहीं जा सकता कोई चीज़, उसी तरह से उसमें एक प्रोविज़न और भी है कि कोई भी पर्सन अपने कंट्री में जो चीज़ इंजॉय करता है उससे ज़्यादा यहाँ पर वो नहीं सीख कर सकता है। वो अपने कंट्री के लिमिट से बाहर उसके यहाँ नहीं जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ कॉपीराइट का टर्म ऑफ प्रोटेक्शन 50 ईयर्स है, तो अगर जैसे अमेरिका में 70 साल है कॉपीराइट प्रोटेक्शन, तो यहाँ इंडिया में वो 50 साल ही प्रोटेक्टेड होगा, उसको यहाँ 70 साल हम नहीं देंगे। तो ये है दूसरा पार्ट है। There are different plays in different languages and somebody is translating into. So what about the translations, like copyright rules and laws, or is there any such kind of association or?
जहाँ तक मुझे जानकारी है, ट्रांसलेटर्स का कोई एसोसिएशन तो नहीं है, लेकिन ट्रांसलेटर को एज ओरिजिनल कॉपीराइट प्रोटेक्शन जरूर हासिल है। अगर ट्रांसलेटर किसी वर्क का ट्रांसलेट करता है तो उसका नया वर्क माना जाएगा और उसको जो है एज ए ट्रांसलेटर उसका अपना सेपरेट राइट होगा। इवन अगर वो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराता है अपने ट्रांसलेशन के वर्क का तो वो एक नया सेपरेट वर्क माना जाएगा और कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट में उसके लिए अलग से प्रोविज़न है कि ये ट्रांसलेटेड वर्क है या नहीं है, और ट्रांसलेटेड वर्क होने के बाद उसको अलग से सेपरेट उसका राइट मिलेगा। I think your third question was related to give an example, recently we have this Avagyan Sakuntalam. So it is based on Kalidas creation. So I think she was asking that if you are using any text, you are making any play based on a certain text. So what are the copyright rules and laws in that regards? इन सच ऐसे केसेस में जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, कालिदास तो कॉपीराइट क्लेम कर नहीं सकते उस पर, तो उस पर जो है वो जो भी परफॉर्मर या जो भी अगर परफॉर्मर स्टेज पे प्ले करता है तो परफॉर्मर का राइट होगा, उस पर कोई भी कॉपीराइट का उसका उल्लंघन नहीं हो सकता है ना, उसको कोई परमिशन की। But current, if something is current, then of course the writer's permission would be required to perform on his work. तो उसमें दो सेपरेट राइट होंगे, परफॉर्मेंस का राइट होगा उसके परफॉर्मेंस पे, जैसा मैंने अपने स्पीच में भी कवर किया था, और वो परफॉर्मर का राइट जो उसके वर्क में कृति में जो राइट है उसको जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा, वो सेपरेट रहेगा। दोनों अपने अपने कृति में या परफॉर्मेंस में राइट एंजॉय करेंगे। और कोई सवाल किसी के पास? अजय, अपना नाम बता के बताओ। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं सन 2000 का स्नातक हूँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से। अभिज्ञान शाकुंतलम के केस में थोड़ा सा मुझे लगता है डिफरेंस है। कालिदास ने वो रचना की, कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन उनकी रचनाओं का वहाँ से अनुवाद या नाट्य रूपांतरण बहुत सारे लोगों ने किया। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम जो हम लोगों ने किया वो मोहन राकेश के द्वारा रूपांतरित नाटक है, और मोहन राकेश का ये नाटक राजकमल प्रकाशन से छपा हुआ है, और उस स्क्रिप्ट को हमने इस्तेमाल किया। हमने कालिदास के मूल कृति को नहीं इस्तेमाल किया है। अब इसमें क्या होगा? क्या मोहन राकेश की तरफ से कोई कॉपीराइट कर सकता है, क्योंकि कॉपीराइट राजकमल प्रकाशन के पास सुरक्षित है? उस केस में अगर आपने किसी एडेप्टेशन का किया है और वो एडेप्टेशन एक इस तरह की कृति बन गई है कि मूल कृति से अलग हो गई है, वो ये केस टू केस डिपेंड करेगा कि वो किस हद तक मुख्य कृति से अलग हो गई है। अगर वो अपने आप में एक यूनिक वर्क बन गया है, एक नया वर्क बन गया है, तो जो पर्सन जिसने उसको बनाया है वो उसका ऑथर माना जाएगा जी, और वो उसका जो है एडेप्टर माना जाएगा। एडेप्टेशन में कॉपीराइट होता है तो एडेप्टर माना जाएगा, और उस केस में आप एडेप्टर का कॉपीराइट वायलेट करेंगे अगर उसके बिना परमिशन के करेंगे। मूल कॉपीराइट का जो अभिज्ञान शकुंतलम के कालिदास हैं उनसे यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ एडेप्टर का राइट आप जो है वो वायलेट कर रहे हैं। तो फिर हमें क्रेडिट भी देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम करते हैं तो हम मूल कृति कालिदास की है, लेकिन हम ये तो हमें मेंशन करना ही पड़ेगा कि क्रिएटेड बाय या अडॉप्टेड बाय मोहन राकेश। उस केस में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके कृति के आधार पे कर रहे हैं जो एक नया वर्क माना गया है। जी बिल्कुल, और रॉयल्टी भी अगर जाएगी तो वो प्रकाशक को या फिर उस लेखक महोदय को जाएगी, में भी है ना। थैंक यू सर। शायद और कोई सवाल? हाँ, स्टूडेंट की तरफ से एक सवाल है। नमस्ते सर, मैं संगीत नाटक थोड़ा अकेडमी जोर से से हूँ। बोलेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए आप। अच्छा, मैं संगीत नाटक अकेडमी से हूँ। हमारे पास अराउंड 9000 कमर्शियल ग्रामोफोन्स हैं, तो हम उनको डिजिटल फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो क्या ये किसी कॉपीराइट के अंडर रहता है या हम करा सकते हैं? नहीं, मतलब आपका परफॉर्मेंस है जिसको आप डिजिटल में फिक्स करना चाहते हैं। नहीं सर, वो हमने परचेज किए हुए हैं, बहुत रेयर ग्रामोफोन्स हैं म्यूज़िक पर। हाँ। तो हम उन्हें डिजिटल फॉर्म में लेना चाहते हैं ताकि आगे जो जनरेशन है उसे यूज़ कर सके। हाँ हाँ। तो ये किसी कॉपीराइट के अंडर तो नहीं आता? नहीं क्या हम नहीं, कर इसमें सकते? कुछ नहीं, आप किसी भी मीडियम में उसको फिक्स कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। चलिए, थैंक यू सर। It depends upon a number of years. Like gramophones are very old recordings, so it must be out of copyright because maximum 50 years is the limit for the performance rights. So I'm sure
gramophones are older than 50 years, so Yes, sir. it must be out of the copyright. So you Thank can you, sir. digitize it. No? थैंक यू सर 60-70 का कोई चीज़ अगर आप डिजिटाइज करना चाहती हैं तो उसमें डेफिनेटली किसी का कॉपीराइट नहीं है, लेकिन अगर रिसेंटली किसी चीज़ को आप करना चाहती हैं तो उसमें ओनर का आपका परमिशन लेना पड़ेगा, विदाउट उसके परमिशन के आप नहीं कर सकते। जी सर। सर मैं पूछना चाहूँगा एक सवाल। सर मेरा नाम विवेक रंग कनौजिया है, मैं 2014 एनएसडी से पास आउट हूँ। सर मैं ये जैसे इस समय करंट सिनेरियो जो है वो ये है कि हम कोई भी चीज़ परफॉर्मेंस के लेवल पे देखते हैं तो हम सीधा एक मीडियम है, मोबाइल उठाते हैं और यूट्यूब ऑन करते हैं और सीधा आजकल बहुत आसान है, उसे हम देखते हैं और समझते हैं। तो अगर हम क्रिएटिव फील्ड में परफॉर्मेंस तैयार करते हैं तो हम इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं यूट्यूब के कई गानों से, या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत से लोग परकशन बजाते हैं और उनका हम म्यूज़िक भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कई बार कुछ फॉरेनर्स के भी होते हैं म्यूज़िक, मतलब बाहर के, आउट ऑफ इंडिया। तो जैसे अगर कोई इंसान जिसने दिल्ली में ही कोई कुछ ऐसी क्रिएट चीज़ की है म्यूज़िक में और हमने उसका कुछ इस्तेमाल कर लिया म्यूज़िक का, और वो यहीं आसपास है एनएसडी के, और अगर उसने देखा मैंने अपनी परफॉर्मेंस में उसका इस्तेमाल किया हुआ, उसने एज एन ऑडियंस आके देख लिया या किसी ने उसको इन्फॉर्म कर दिया, तो यूट्यूब में तो कहीं पे दे नहीं रखा होता है कि जैसे हम कोई किताब में हम पढ़ते हैं कि इस राइटर की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, चिट्ठी के थ्रू लेटर आपको भेजना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे यूट्यूब में ऐसा कुछ दे नहीं रखा होता है। और अगर हमने कर लिया तो अगर उसने क्लेम कर दिया तो इस अवस्था में हम क्या करेंगे? हम देखिए परफॉर्मर के उस केस में लहजे अगर से। आप अपने प्राइवेट इंजॉयमेंट के लिए वो चीज़ कर रहे हैं, आपने ऐसा किया है और आप खाली उसको प्राइवेटली अपना घर में देख रहे हैं और आप खुद यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कोई आपका कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं बनता है किसी का, क्योंकि वो आप पब्लिक बिल्कुल डोमेन में है। जी, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है। नॉट इवन पब्लिक डोमेन, अगर उसका करंट कॉपीराइट भी है जी। और आपने उसका जो उठा लिया है कंटेंट अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं कर सकते। वो आप जो है एक्सेप्शन में आ जाएगा और वो जो एक्चुअल ओनर है वो आपका राइट नहीं क्लेम कर सके, डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकेगा, इन्फ्रिंजमेंट क्लेम नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप बना के आप उसका कॉमर्शियल उपयोग करते हैं, आप उसको कहीं पब्लिक में कम्युनिकेट करते हैं, कहीं किसी परफॉर्मेंस पब्लिक प्लेस पे दिखाते हैं जिससे आपको कॉमर्शियल बेनिफिट हो रहा है, तब जरूर वो क्लेम कर सकता है आपके खिलाफ इन्फ्रिंजमेंट का। तो उसने लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तो हम कैसे उसको, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मतलब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको इन्फॉर्म करूँ तो क्या हमें उसके कॉन्टैक्ट्स में जाना चाहिए कि उसका कॉन्टैक्ट क्या है, पहले उसको वो ईजाद करके फिर हमें उसे कंफर्म कराना चाहिए कि भाई हम आपका ये चीज़ इस्तेमाल करने जा रहे हैं? देखिए उस केस में वही बात आती है कि अगर वो आप पब्लिक डोमेन में पब्लिक में अगर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके ओरिजिनल रिसोर्स तक जाएं और उसको इन्फॉर्म करें, अदरवाइज प्राइवेट में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। ओके, थैंक यू। आई थिंक मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ। बिल्कुल। देखिए, एक पब्लिक डोमेन और फ्री, ये कंसेप्ट अलग है और कॉपीराइट एक अलग इशू है। फ्री होने का मतलब ये नहीं कि कोई भी उसे यूज़ कर सकता है। पढ़ सकते हो आप, अपने एकेडमिक रिसर्च पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, प्राइवेट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी फ्री इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी पब्लिक डोमेन हो। तो सबसे ज़रूरी है कि जहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ पर क्या क्लॉज दे रखा है उन्होंने, कोई क्योंकि जनरली यूट्यूब में आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ पर कोई जानकारी नहीं होती है। तो एक तो सबसे पहला तरीका, जो सबसे बेस्ट तरीका जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि ट्राई टू फाइंड आउट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड उनको लिखिए और उनसे परमिशन लीजिए। अगर आप परफॉर्मेंस, पब्लिक परफॉर्मेंस में यूज़ करना चाहते हैं, आप स्कूल इन हाउस क्लासरूम के लिए करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब अगर पब्लिक परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप उनसे परमिशन लीजिए। लेकिन अगर आप कोशिश करने के बावजूद भी उस डिटेल तक नहीं पहुंच पाते, आप नहीं जान पाते कि हु इज़ द रियल क्रिएटर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, तो उसका एक, क्योंकि ये इशू कॉपीराइट से ज़्यादा प्लेजरिज्म में आता है, इट इज़ ए मोर ऑफ ए प्लेजरिज्म रेदर देन ए कॉपीराइट इशू। तो उसका एक एक्सेप्शन है जो कि रिसर्च और एकेडमिक डोमेन के साथ साथ अदर जगह भी होता है कि आप जब वो परफॉर्मेंस करें तो आपको वहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, म्यूजिक और सोर्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस एंड आई वांट टू एक्नॉलेज दैट। वो पब्लिक परफॉर्मेंस में उसको अनाउंस करना पड़ेगा।
आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि दिस इज नॉट योर क्रिएशन, Credit दिस देना इज होगा। क्रिएशन ऑफ समबडी एल्स, बट आई एम यूजिंग फॉर माई परफॉर्मेंस पर्पज एंड आई ड्यूली एक्नॉलेज दैट। जी, जैसे गुलजार साहब की कई ऐसी नज़में हैं या बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो हमारे परफॉर्मेंस में कई बार हम प्रभावित होके उनका इस्तेमाल हम वर्बली भी कर लेते हैं एज एन एक्टर, और कभी हम उनको कैसे ना कैसे किसी थ्रू से दिखा भी देते हैं। तो गुलजार साहब को नहीं पता चल पाता है कि हमने अपनी परफॉर्मेंस में उनके 4 लाइनें, नहीं, 8 उसका तरीका है, जब आप उसको इस्तेमाल करें, कहें गुलजार साहब ने कहा है, बिल्कुल, तो आप एक बार जब उस आदमी क्रिएटर को एक्नॉलेज करेंगे तो वो एक प्लेजरिज्म या वायोलेशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से उसको पढ़ेंगे तो वो लगेगा कि आपका क्रिएशन है और वो आपको प्लेजरिज्म के लिए केस बन सकता है। बात किसी की भी हो, किसी भी क्रिएटर की हो, तो या तो आप उनसे परमिशन लीजिए कि मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको नहीं देना। लेकिन अगर आप किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, म्यूज़िक में भी, डायलॉग और कुछ भी, उसके लिए ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो हमें इन सब चीज़ों से बचाता है। क्रेडिट मेंशन होना चाहिए। एब्सोल्युटली। ओके, यहाँ पर मैं बिल्कुल सर, डायरेक्टर सर ने बिल्कुल सही कहा है। इसमें जैसे हम कवर वर्जन का आपको एग्जांपल देना चाहेंगे। अगर आप सपोज करिए किसी सॉन्ग का कवर वर्जन बनाना चाह रहे हैं, कवर वर्जन से मतलब मेरा समझ रहे होंगे आप कि अगर कोई ओरिजिनल सिंगर है और उसने समझ करिए मन्ना डे ने कोई गाना गाया है, अब उसको हम उसका नया कवर वर्जन बनाना चाह रहे हैं अपने आवाज़ में और अपने म्यूज़िक कंपोजिशन के साथ में, तो हमें उसमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा ओरिजिनल सिंगर कौन है, ओरिजिनल कंपोज़र कौन है। अगर हम उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो हम उसका जो है वो उल्लंघन करेंगे। तो ये बिल्कुल बात वहाँ खरी उतरती है। सर, मैं तसव्वुर अली 2016 में एनएसडी से पास आउट हुआ था। अभी वर्तमान समय में टीआई कंपनी में हूँ। सर, एक क्वेश्चन है कि हम परफॉर्मिंग आर्ट वाले लोग जब कोई एक परफॉर्मेंस तैयार कर रहे हैं और हमने इतना देख रखा है, पढ़ रखा है, और हमारी परफॉर्मेंस में हमारी इमेजिनरी चीज़ कुछ ऐसी है या हमारा कुछ क्रिएशंस ऐसा है जो किसी दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हो जाता है, या हमारी कोई कंपोजिशंस ऐसी बन जाती है जो हम अपने से बनाते हैं लेकिन वो किसी की तरह एकदम सिमिलर हो जाती है, और वो बोलता है कि ये आपने लिया है हमसे और हमने नहीं देखा होता है, तो उस दशा में तब क्या होगा सर? जरा फिर से आप थोड़ा दोहराएंगे क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम कोई परफॉर्मेंस तैयार करते हैं और उस तैयारी में हमारी इमेजिनेशंस में हम कुछ नाटक तैयार कर रहे हैं, उसमें कुछ कंपोजिशंस डाल रहे हैं अपनी बना करके, अपनी तरफ से डाल रहे हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि वही कंपोजिशंस, वो सारी चीज़ें सिमिलर कहीं और होती हैं जो कि बिल्कुल बिना आपकी जानकारी के। हाँ, वो मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ। और हमने उसको किया है तो दूसरा उसको कहता है कि ये मेरा कॉपी किया है, तो उस दशा में क्या होगा? देखिए, उस दशा में तो फिर वो सब्जेक्ट टू कोर्ट्स डिस्क्रिप्शन और इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है यहाँ पर। उसको सरकमस्टांसेस में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको उसकी जानकारी नहीं थी या उस पर्सन को उसकी जानकारी नहीं थी एंड आपने इनोसेंटली ये चीज़ किया है, तो उस केस में तो मतलब ऐसा कोई उल्लंघन बनता नहीं है। लेकिन ये केस टू केस डिपेंड करेगा और ये उसके आधार पे इसका कोई एक्ट तो साइलेंट है इस बारे में, ये केस टू केस डिपेंड करेगा कि सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, उस पर आपका डिपेंड करेगा। सर, मैं चेतना वशिष्ठ हूँ, एनएसडी में असिस्टेंट डायरेक्टर राजभाषा। मेरा ये सवाल है कि एक इन हाउस मैगज़ीन हम लोग निकालते हैं, एनएसडी की इन हाउस मैगज़ीन, तो उसका कवर पेज और उसके अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं उसके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह वो हम लोग गूगल से ले लेते हैं, तो उसमें कोई परेशानी तो नहीं है, किसी का कॉपीराइट या कोई परेशानी इस तरह की? नहीं, जो चीज़ पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, गूगल पे जो चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, तो हम उसको ले सकते हैं, उसमें कोई कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। जी, थैंक यू सर। है आप ले सकते हैं अगर सर। वो फ्री है, बट उसका सोर्स डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा। आप बगैर सोर्स डिस्क्लोज किए अगर करेंगे तो वायलेशन है। तो जैसे माने आपने कोई फ़ोटो लिया गूगल से, तो उसका नीचे सोर्स लिखिए, ये वेबसाइट है और ये पर्टिकुलर उसका कोई क्रिएटर, जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ दे रखी है
उसको डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। हर फोटोग्राफ के नीचे लिखा जाएगा कि बिल्कुल बिल्कुल, हर फोटोग्राफ अगर आप नहीं लिखा तो इट्स अ वायलेशन, ओके क्योंकि यू आर नॉट द क्रिएटर ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, एनएसडी इज नॉट अ क्रिएटर ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, इट इज अ क्रिएटेड बाय समबडी एल्स, तो वी हैव टू गिव कंप्लीट सोर्स, नहीं तो इट इज अ वायलेशन। एक और सवाल है इसी से संबंधित, जैसे कि मैं हिंदी उत्सव वगैरह यहाँ पे जैसे आयोजित होता है तो मैं उसकी एंकरिंग करती हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब में कुछ मैंने हिंदी की बड़ी अच्छी पंक्तियाँ देखी, यूट्यूब से सुन लिया या नेट से देख लिया, तो मैं उन पंक्तियों को एंकरिंग के दौरान यूज़ करती हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ये भी वाले हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एंकरिंग में कोई इशू नहीं है, लेकिन यह है कि बताना पड़ेगा मुझे उसका कोई, देखिए जहाँ पर कहीं कमर्शियल या कोई इस तरह का पर्पस नहीं है तो इस तरह की, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ ए काइंड ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स और उस तरह की चीज़ें, इसमें कोई फेयर यूज जो आप बात कर रहे हैं, हम एक्सेप्शन बात करें उसी में आते हैं, कोई इशू नहीं। थैंक यू सर। बस हमारा टाइम हो रहा है अभी, अगर किसी को लास्ट सवाल ले सकते हैं, लास्ट सवाल ले आप अंजू जेटली जी, आप कुछ बोल रहे थे। सर वो अभी तसब्बर ने एक जो क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज़ कर रहे होते हैं और एक ही समय में 2 लोगों के दिमाग में या 3 लोगों के दिमाग में एक जैसी बात आती है, और किसी ने पहले वो कर दिया तो जैसे उसने कहा कि दूसरा ये बोलेगा कि तुमने कॉपी किया, लेकिन उस समय तो हमें नहीं पता कि तुम भी यही बात सोच रहे हो या तुम भी इसको इसी तरह से ड्रामेटाइज करने की सोच रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्या उसमें भी कोई कॉपीराइट इशू होता है? या एक चीज़ बहुत क्लियर है कि कॉपीराइट जो है खाली आइडिया में नहीं होता है, एक्सप्रेशन में होता है। जी, सपोज करिए कि मेरे दिमाग में एक कहानी का प्लॉट आया और हमने आपको सुना दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, ये है वो है जी, और आपने उसको टेंजिबल फॉर्मेट में बना लिया, जी, उसको लिख लिया या आपने उसका कोई रिकॉर्ड बना लिया, कुछ कर लिया, तो कॉपीराइट हमेशा एक्सप्रेशन में होता है। अगर पहला एक्सप्रेशन आपने बना लिया है, उसको टेंजिबल फॉर्मेट में ले आए हैं, वस्तु रूप में ले आए हैं, तो आपका कॉपीराइट होगा। खाली आइडिया से हम राइट नहीं क्लेम कर सकेंगे कि हमने इनको आइडिया दिया है। देयर इज नो कॉपीराइट इन आइडिया। ओके, थैंक यू। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को ऐड करूं, बिल्कुल सही कहा हमने, लेकिन अगर वो सिमिलर परफॉर्मेंस या सिमिलर आइडिया ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में एग्जिस्ट करता है आपसे पहले, सो देन यू कैन बी इन ट्रबल। अगर वो किसी के दिमाग में है आइडिया, एक्सप्रेशन नहीं बना है, तो ठीक है, चलेगा कि सिमिलर हो सकता है, लेकिन अगर किसी की परफॉर्मेंस वो ऑलरेडी कहीं पब्लिक डोमेन में है और रजिस्टर्ड है कि ये इस तरीके से हुआ था और आप उसको ऐसा ही कर रहे हो, तो आपकी इंटेंशन चाहे कोई भी हो, इट इज़ ए वायलेशन और इट विल बी कंसिडर्ड ए काइंड ऑफ ऑफेंस। बस अंत में मैं एक थोड़ा सा जो फेस कर रहा था कुछ सवाल बीच में, तो एक सर से जानना चाहूँगा। एक ग्रुप, थिएटर ग्रुप ज़्यादातर डायरेक्टर बाहर से बुलाते हैं, तो अगर मुझे किसी ने डायरेक्ट करने बुलाया और मैंने एक प्ले डायरेक्ट किया उनके लिए और मुझे पेमेंट किया, मैं आ गया, उसके बाद 1 साल वो नाटक चलता रहा, कुछ कुछ शोज होते रहे, फिर सेकेंड ईयर में उन्होंने नाटक का डायरेक्टर का नाम किसी और का डाल दिया, तो मैं क्लेम कर सकता हूँ क्या नेक्स्ट ईयर में? मॉरल राइट क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका रेपुटेशन, आपका रेपुटेशन को खराब कर रहा है। माइक सर जी, सॉरी, हाँ, ऐसे केसेस बहुत होते हैं। यहाँ आपका मॉरल राइट अफेक्टेड होता है। आपका नाम अगर बदल के दूसरे का नाम डाला गया है तो आपका राइट जो है वो मॉरली आपको इन्फ्रिंज किया गया है, आप बिल्कुल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। बस हम आखिरी में आ गए हैं। अब अध्यक्षीय तथा समापन वक्तव्य के लिए मैं अनुरोध करता हूँ सर से अंत में। आइए। I just want to thank our honorable speaker, our all colleagues who made it so interactive, and thanks to all online participants, and we look forward to another such session because this is the beginning of this series, and I'm expecting one more learned speaker in the series, maybe some due course of time. So thank you very much, Sarup Saab, for your wonderful time and such a
liberated. And thank you all for making this so lively. And we look forward to another lecture. Thank you very much.